गुड इवनिंग एवरीवन। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, उसके सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ। इंटरेस्ट रेट डिसीजन 4.25% प्रीवियस था, 4% का एक्सपेक्टेशन था एंड 4% ही आया है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट का एक्सपेक्टेशन था, इंटरेस्ट रेट कट ही हुआ है। अब वोट काउंट यहाँ पर दिए गए हैं। 8 लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 8 लोग बोलेंगे कि कट करना चाहिए, लेकिन 5 लोगों ने ही बोला है। टोटल 9 मेंबर की कमेटी है। ऐसा था कि 8 बोलेंगे कट करो, 1 बोलेगा कुछ मत करो, इसके बाद इतने बोला है कट और 4 ने बोला है कुछ मत करो। तो कुछ नहीं करने वाले लोग, देखो 3 स्टेज होते हैं इंटरेस्ट रेट के, कट, होल्ड एंड हाइक। तो नीचे 8, उसके ऊपर 1 और उसके ऊपर 0, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। 8 1 0, लेकिन हुआ क्या है 5 4 और 0। तो ज्यादा लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो जितने ज्यादा लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। सो उसे हम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव मानेंगे, तो एक जीबीपी यूएसडी के लिए पॉजिटिव चीज है। अब बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नॉर्मली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चल रहा है, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी है। 5 बजे का टाइम था। Well, real press conference with the governor, and we'll have. So today we've cut bank rates by 0.25 percentage points to 4%. There's been substantial disinflation over the past 2 years, supported by the restrictive stance of monetary policy. Domestic price and wage pressures have generally continued to abate in recent months, and that's allowed us to take another step today in reducing bank rates. But the picture is more complex than that. Headline inflation rose to 3.6% on the latest data for June, owing to increases in energy, food, and administered prices. Now, we have been expecting this move up. Indeed, I referred to it at the last press conference we had in May. We think that inflation will increase to around 4% in September. तो इन्फ्लेशन जो है वो इस बार 3.6% का रेट से बढ़ा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 4% के रेट से बढ़ेगा, जो कि ऊपर की तरफ बात हो रही है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, यानी कि करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, राइट। सो इट्स अ हॉकी स्टेटमेंट। Our job is to ensure that inflation falls back to the 2% target once these temporary factors pass, as we expect to see. So it remains important that we do not cut bank rate too quickly or by too much. Today's decision is based on 3 key judgments on the outlook for the UK economy and inflation, and our assessment of the risks around those judgments. एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि हमारा काम है इन्फ्लेशन को 2% पे लाना। तो अगर इन्फ्लेशन जो बढ़ने वाला है वो टेम्पररी है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो वापस 2% पे आए। उसके लिए ये जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी कट ना करें, ये बहुत ज्यादा कट ना करें। तो ये भी एक हॉकी स्टेटमेंट है। So I'm going to set out each of these key judgments in turn, and then I'll conclude with the implications for monetary policy. The first key judgment is that disinflation in underlying domestic price and wage pressures is generally continuing, albeit to different degrees. Headline inflation is likely to pick up slightly further in the coming months, but we do not expect this increase to persist. Chart 1, which has just come up, shows the development of ये इन्फ्लेशन के डेवलपमेंट का चार्ट है। 12-month consumer price inflation since 2021, that's the white line, along with its components, which are the coloured bars. The largest driver of the rise in headline inflation over the past year has been energy prices, which are no longer pushing inflation down. You can see that in the orange bars.
while the contribution from services price inflation, which is the yellow bars, has remained elevated. More सर्विसेज की वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है. recently, higher food price inflation has also contributed to higher headline inflation. That's the purple bars. In the shaded area, the chart shows how we expect headline inflation to peak at about 4% in September. आगे जाएगा उसका ये प्रोजेक्शन है जो लास्ट में जो आपको शेड एरिया दिख रहा है वो. In addition to the contributions from energy and food prices, inflation will continue to be held up over the coming months by a number of increases in regulated and administered prices, such as water bills and vehicle excise duty, that are not directly linked to underlying cost pressures in the UK economy. There are good reasons to think that this rise in headline inflation will not persist. Now, as chart 2 shows, excluding the impact of administered prices, there has been some further progress on disinflation and services inflation. Inflation in services prices that is more directly linked to cost pressures in the UK economy has therefore continued to ease, albeit gradually. And pay growth, a key component of cost pressures in the UK economy, has declined further recently. Annual private sector regular pay growth, shown in chart 3, this is, that's the purple line, if you can detect it in the menus, was 4. वेज ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो 4%. वेज ग्रोथ कम होगा तो ये एक डविश स्टेटमेंट है. 9% in the 3 months to May, about half a percentage point weaker than we had expected in the May report. Now, this is in line with a range of other indicators also pointing to a gradual slowing in pay growth. Annual pay growth is likely to ease further over the second half of the year. That's the purple diamonds. Intelligence from the bank's agents continues to point to average pay rises for this year of between 3.5% and 4%. That's the green dot. And the bank's decision maker panel expects pay growth to be just under 4% by the end of the year. That's the slightly hidden yellow diamond. We should expect this gradual normalization in pay growth to feed through to lower services price inflation as we look ahead. But the risk वेज ग्रोथ कम होगा उसकी वजह से सर्विसेज इन्फ्लेशन जो अभी ज्यादा है वो भी आगे जाते हुए कम होगा. that the recent rise in prices could feed more inflation, as illustrated in the inflation persistence scenario that we set out in the May report, has come into sharper focus. Higher food and energy price inflation and some additional pressure from other components has increased the peak in headline inflation we expect in September by about 0.3 percentage points compared to the projection we had in May. Food and energy prices are salient to consumers and often affect inflation expectations more than other prices. So we have to be very careful that this does not lead to any additional second-round effects on wage and price setting in the economy. The slight increase in the upside risk to inflation makes the second and third key judgments underlying our decision today all the more important. And these key judgments have not changed since May. The second key judgment is that a margin of slack has opened up in the UK economy and the labour market is continuing to loosen. While we expect it to pick up a little in coming quarters, growth in the UK economy remains. Employment growth is good. ग्रोथ जो है वो थोड़ा इकोनॉमी में सबड्यूड है यानी कि कम है तो ये भी एक डविश स्टेटमेंट है. And the ratio of vacancies to unemployment has fallen further. Surveys of capacity utilisation suggest growing spare capacity within firms. And here, risks are more to the downside. While real household incomes have risen over risks are more to downside यानी कि रिस्क जो है वो नीचे की तरफ है. डविश स्टेटमेंट. the past couple of years, consumption has not followed suit. The saving ratio remains notably above pre-pandemic levels, and we have for some time been expecting it to decline and support consumer spending. Consumers appear to remain more cautious than we have expected, perhaps exacerbated by broader downside risks to activity and the risk of more sudden adverse developments in the labour market. Now, the third key judgment is that the margin of slack will act against remaining persistence in domestic price and wage setting to return inflation to the 2% target in the medium term. While inflation is somewhat higher in the first 2 years of our August baseline projection than in May,
a margin of slack in the economy helps fully to normalise pay and pricing dynamics in the medium term. Accordingly, chart 4, which has just come up, shows, conditional on the market implied path of bank rate, inflation returns to the 2% target in the second quarter of 2027 in our baseline projection and remains a target thereafter. 2027 में inflation जो है There are 2% के risks on target both पे sides पहुंचेगा. of this projection. The extent of the shift in global trade patterns and how this may come to affect external pressures on UK inflation remains uncertain. Recent domestic news suggests that the risks to inflation have shifted slightly more to the upside. The near-term peak is likely to be a bit higher than we previously expected, and the risk of second-round effects means that it may take somewhat longer for inflation to return to target. But at the same time, there are slightly more risks on the downside to activity. Economic growth is subdued, the labour market continues to loosen, and consumption growth may take longer to pick up. That in turn could lead to inflation falling below the 2% target further ahead. So, do we put more weight on the recent pickup in inflation and the risk it poses to inflation persistence, or do we put more weight on the risk that the recent weakness in activity could lead to inflation weakness further out? Well, the answer is that we set monetary policy to reflect our assessment of the balance of the risks, and we set monetary policy in a forward-looking manner to return inflation to the 2% target sustainably over the medium term. That sometimes means that we will be able to look through developments that we think are unlikely to last. But we stand ready to adjust our course if we see shifts in the balance of risk to the medium-term outlook for inflation. And we will do what it takes to return inflation to our 2% target. At this meeting, the Monetary Policy Committee judged that a further 0.25 percentage points reduction in the bank rate was appropriate. Based on the outlook for inflation, a gradual and careful approach to the further withdrawal of monetary policy restraint remains appropriate. The restrictiveness of monetary policy has fallen as bank rate has been reduced. The timing and pace of future reductions in the restrictiveness of policy will depend on the extent to which underlying disinflationary pressures continue to ease. Monetary policy is not on a preset path, and the committee will remain responsive to the accumulation of evidence. So with that, Dave Crown and I will be happy to take your questions. Thank you. We'll remain, and then Richard. Hello, Marion Khan from The Times. I think this is probably a question for Claire because you voted to hold rates. So what is your threshold for cutting rates again this year? Do you need to see material evidence of more disinflation beyond what's in this forecast to argue for another rate cut? And given that food price inflation is very important in this forecast because it has surprised you, is it not a danger that by keeping rates restrictive, again, maybe to Claire, that you're just worsening the cost of living pressures that British households are already facing with higher energy, utility and food prices? Sure, thanks. I mean, today we're talking about the policy decision taken by the whole of the committee and the information that we're putting out today. There is a paragraph in the minutes that sets out my view and the views of the other in a lot more temperate. The Guardian. Policy having on this higher inflation, Guardian. How much of an impact is government policy having on this higher inflation position and the reach to 4%? You talk a lot about food prices and how there is a contribution there from the employment tax increases and packaging changes. But there's also an impact on unemployment. Does it now appear there's more pass-through on prices than the impact on jobs? And then the Chancellor said today that government policy has returned stability to the economy and made it possible for the bank to be cutting. But are you not saying today that the government has made things harder if it's adding to inflationary pressures? Well, the thing I would say, Richard, to that is that what sets out, and as you'll see in the box that we've included on food prices, which goes into food prices at some length, there are quite a lot of contributions to this. So there's a lot of smallish contributions to this that make. Some of those are global. Energy, for instance, is predominantly being affected, obviously, by global developments, of which there have been a lot. A good part of the food price story is to do with commodity prices, and a good
part of that is commodities which are not produced in this country, so coffee and cocoa would be cocoa beans would be an obvious case in point. There is an element of, as we've said, of administered, domestically administered, that is price effects in here, so water bills, vehicle excise duty, packaging tax in the food industry, which we again do describe in the box. Now, it's obviously a little bit hazardous to try to sort of parse those out exactly, but I think it's a little bit under half in each of those two, probably. Let me talk a bit about food, and also it picks up the Marine's point as well. I mean, look, on food prices, so food price inflation went up 4.5% in June. Right? There was some news in that for us. We did expect it to go up, we didn't expect it to go up quite as much as it did. I mean, that's obviously considerably higher than the sort of pre-COVID average of 1.5. Now, a lot of that is driven by global factors, and you can see we've तो यहाँ पर डिस्कशन जो हो रहा है पूरा वो फूड प्राइस इन्फ्लेशन पे हो रहा है। अब ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन इन्होंने बोला कि जून महीने में जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब इन्फ्लेशन जो हम देखते हैं, आप सीपीआई देखते हो, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक कंपोनेंट होता है फूड, राइट? सो फूड का कंपोनेंट मेनली क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फूड होता है, एनर्जी होता है, एंड सर्विसेज होता है, एंड गुड्स होता है। तो उसमें ये फूड के बारे में बात हो रही है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि सर्विसेज इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन उन्होंने शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट दिया वहां पे दिया है, राइट? अब ये फूड की बात हो रही है, तो फूड का भी ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा ज्यादा है। तो 4 कंपोनेंट है, उसमें अगर सारे कंपोनेंट्स या मेजर कंपोनेंट्स अगर ज्यादा की तरफ रहेंगे तो आगे जाते हुए इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज होना, ईज आउट होना वो इतना आसान नहीं है। तो वो ये इसका जो बाइफरकेशन है उस पर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? तो हम वो सुन रहे हैं। तो अब तक जो स्टेटमेंट आया है वो ये पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो स्टेटमेंट आया है वो एक हॉकी स्टेटमेंट है। and how this food prices in the UK compared to in the EU, and you can see it's the same sort of. एंड उन्होंने बोला है कि हम काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो वो जैसे चीजें आएंगी बाहर जो प्राइसेस रहेंगे उस हिसाब से हो पाएगा, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन दैट। A lot of that is about commodity prices and agricultural goods, as Andrew said, with some particular pressures around things like beef, butter. A lot of that is about feed. Some of this is driven by weather events, extra rainfall, or droughts, or particularly dry periods. So a real mix of things that are going on. We've also seen changing in the pattern of demand globally as well. So it's not just that. So that's sort of the majority of the change that we've seen in food prices. There is an element that is some of the other factors, packaging, labour costs and all that. I mean, we expect food prices are going to carry on rising. Actually, sort of we've got in our short-term forecast 5.5% this side of Christmas. ये बोल रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फूड प्राइसेस आगे जाते हुए बढ़ेंगे और क्रिसमस तक वो हो सकते हैं। अभी 4.5 बोला था इन्होंने, हुआ जून में, क्रिसमस तक वो 5.5% हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन और आगे जाते हुए बढ़ेगा, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन जो है वो। तो ये एक रियली एक हॉकी स्टेटमेंट है ये। Before falling back, and we would expect them to fall back as these cost pressures fade, global wholesale factors. कि आने वाले 6 महीने की बात हो रही है इसलिए। I mean, look, the reason we look at this carefully in this basket, you saw in Andrew's, the previous question is sort of twofold. It's a large part of the basket. You saw in Andrew's charts, this is 11% of the CPI basket. It's obviously more than that for people on lower incomes, and comes after the sort of cost of living pressures that we've seen. It's also particularly, has a particularly salient role in inflation expectations. We know that people notice it more. Alongside energy, food is the most salient part of inflation that people notice, and therefore it affects their experience of inflation, but also their expectations of inflation. So it's something that we're focused on, and as Andrew said, we've put a box in the NPR talking a lot more detail on. Vice Andrew's News. In your statement, Governor, you said that interest rates are still on a downward path. Are they definitely still on a downward path? Yes. What I would say, Faisal, on that is that I do think the path continues to be downward. There are all sorts of, I mean, we've included a box on restrictiveness. There are all sorts of views on where the neutral rate might be. I'm in the camp of people who sort of think that's rather too uncertain to speculate on, but I think it's very important to sort of talk about the whole idea of restrictiveness, and we've put a lot in there about how we assess it.
And I do think policy is still restrictive, even when we say we're past the peak. Of course, that's a comment on, if you like, on the level, as it were. But, not the direction might be sort of be less restrictive, but the level can still be and is still restrictive. So I do think that. What I will say, and you saw it in my opening remarks, I hope I heard it, is that there is, however, genuine uncertainty now about the course of that direction of rates. I'll be honest with you, that's the problem I was making, is that I think the path has become more uncertain because of what we're seeing. We're telling a story here with it that we've got an upside risk, which is really a sort of can be more directly mapped into inflation. It goes to the previous two questions actually. सवाल ये है कि क्या इंटरेस्ट रेट का पाथ नीचे की तरफ ही है, मतलब आगे तो इंटरेस्ट रेट कट ही होंगे, क्योंकि ये तो लास्ट टाइम हमने मतलब पहले भी यूके के सेंट्रल बैंक ने बोला था कि इंटरेस्ट रेट तो धीरे धीरे कट ही होंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ वैसे तो कट ही होने चाहिए, लेकिन फिर भी अभी पहले जो क्लैरिटी थी कि कट ही होंगे उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ ही जाए। देखो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हॉकी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ना जाए या न्यूट्रल रेट पे भी शायद हम पहुंच जाए, या जो डिस्कशन है फ्रैंकली स्पीकिंग 4% इंटरेस्ट रेट पे ये डिस्कशन होना नहीं चाहिए। अगर 4% इंटरेस्ट रेट पे ये डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये इज अ रियली हॉकिश स्टेटमेंट। We've got a downside risk, which of course gets to inflation via weaker activity, weaker labour market story, and we are balancing those two risks. Now, I think the path has become more uncertain, but I don't think, I certainly don't have not changed my view on the overall sort of, if you like, direction of the path. It's a question of how uncertain it is, and therefore we recommend it. Thank you, Gabrielle Nolan, Sky News. I noticed from the minutes that one member of the committee said that they were worried about an increased risk of recession. Is that a concern that's shared by other members of the Monetary Policy Committee? It's not actually something that we spend time discussing explicitly. You can see that we've got a chart in the report which shows, in a sense, that a band around the activity outlook. So I would say, I can only speak for myself really at this point, having voted for a 25 basis point cut. My vote was not, I should say, motivated by my concerns about a risk of recession. The other thing I would say is that actually, this does come out in the report, our actual view on the path of activity going forward has changed really very little since May, if you actually can. क्या रिसेशन हो सकता है आगे जाते हुए, ये सवाल है, तो उन्होंने बोला है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। What's in the report today with what was in the May report actually on the activity front. Just on, if anything, it's actually slightly stronger, very slight. So we've got, the UK economic growth is weak, right? It's weak in these numbers. We've got, I think 1.25% is the forecast for this year. That is slightly higher than last year, slightly higher than our last forecast, but it's not, it's not something that you. यूके का ग्रोथ नंबर जो है वो वीक है, लेकिन फिर भी प्रीवियस फोरकास्ट से थोड़ा हायर साइड पे, तो ये भी एक हॉकी स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो है वो हॉकिशनेस की तरफ थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा क्विकली जाएंगे इसमें। But it is we are seeing growth, and we do actually expect it to increase further out in the forecast, again not particularly high rate of make around weak activities. It really matters for inflation, what is driving that with levels that. We've got 1.25% growth that if I can just supplement what Claire said. For the decision around inflation rates. If I can just supplement what Claire said, we've got 1.25% growth that we're forecasting to the current quarter. Then we see growth over the next year, another 1.25%, and then we've got growth picking up to 1.5%. So, these are modest growth rates by historical standards, but they're positive. Obviously, there are risks around those, and as Andrew's emphasised, the risk around inflation, the upside risk around inflation has increased since May. The downside risk around activity is also more apparent, but our baseline forecast, which has not really changed actually. And then, even as you have come Governor, the government's borrowing costs have actually gone up even as you have cut
interest rates. Why do you think it is that markets are charging a premium to the UK? Is it possible that investors doubt your commitment to tackling inflation? Do you think it's concerns about the government's spending plans? I don't think so. I mean, I think, first of all, Joel, I would say if you look across this year, as calendar year that is, and you compare the UK with actually other major countries, the moves in curves have been quite similar in some ways. So the steepening of curves that we've seen, which I think is what you're alluding to, that we've seen across this year is actually a phenomenon that we've seen across major government bond markets. So there isn't, I think, in that part of the market, I don't think there's a particularly UK story going on. Because I think, I mean, we set out in detail forwards, okay, in Japan is a global focus. And we also know at the long end of the curve that for the bar, Historically, it's been in a somewhat different position because the UK has raised more government debt at longer maturities. Now, actually, that's a good policy. There's much to be recommended with that policy over the long term. But it does mean that the UK has somewhat more of the UK debt stock has somewhat more of a focus on the long end of the curve. From Press Association. Firms are saying that higher employer taxes are weighing on growth and trade uncertainty has dragged on investment. It seems like a fairly gloomy picture here, but you've raised your projections for GDP. So can you just explain a bit more about your reasoning here? So raise the projections. You've raised your outlook for GDP this year, so can you just explain? Oh, well, that really is on data releases that we've had since the last report. I think, as Claire and I were both saying earlier, really, and actually Dave was saying as well, if you look back to the February report, as you were saying, Dave, you really don't see much of a change in our overall report. Changes are. Chris Joss on the Financial Times. The inflation forecasts in this report are almost of a crest of perfection. So within 2 years, you get down to a central forecast mean mode, median and mode of 2%, and then it just stays there all the way to 3 years and into the future. Is this the time you are actually validating the forward curve, which has interest rates coming down to 3.5%? And is 3.5% now currently, it can change, but is it currently your view of where interest rates might settle? Well, I'm sure Claire wants to go in. Let me start, Chris, by saying, putting it into a slightly broader context, of course, that we are, and this is really part of the Bernanke changes, that we are, as he recommended, while we're still committed to producing the forecast, and it is a committee forecast, which does distinguish us from quite a few other central banks. The centrality of that, we are building around it, as you know from what we've said and what Bernanke said, we're building around it, a broader range of analysis. We use the scenarios in May and we've rolled them over and we're drawing on them again this time. So you're right in your description of the forecast, by the way. I mean, that's a fair description of it. Price to perfection obviously sets the bar quite high for achieving it. But I would just say, I'll just come back to what I said in my opening remarks, if you don't mind, about the risks, because there are real risks. The risks are quite real and very apparent around that, frankly. And as I said in the opening remarks, the risks go both ways. So slightly more inflation. So I would sort of temper what you said about Even one of the inflation bullish assumption. the get raised, but You say that working people are under pressure, and why do you expect those pressures to intensify later this year and into next? We have, sorry, ask it again, the post. To zero, to driving the downgrades, that starts. The increase in wages will, come down, if you like, and you can see that in our numbers. We are, obviously we have higher inflation in this forecast going forward. So in that sense, this is it is a constellation that is challenging. So
labour income grew by 10%. This Richard Gupta, CNBC. Do you think rate cuts are having a big enough impact on growth? We tend to think that policy takes a year to 18 months to have an impact, but we're a year after the first rate cut. We've had 5 since then. I'm thinking of some areas like the mortgage market, for instance. Do you think that we're actually continuing to see the impacts of tightening even as policy is easing? Well, a couple of things on that. That's a good question. So, of course, to make that judgment, you'd have to sort of form a view on what the path of growth would have been had we obviously not changed interest rates to assess how much. But the second thing I'd say is I think there are 2 areas to look at, which, and there are obviously 2 very central areas actually to this question to in a sense describe the answer to your question, and that's consumption and investment. So to start with consumption, I mean, it is the case, and we described it in the report, and I referred to it in my remarks, that the saving rate has been higher now for longer than we expected it to be. We couldn't see this question. We've got consumption path that's weaker than we thought it would be, which obviously gives us I think अभी कुछ खास है नहीं पूछने को. Thank you. How worried are Governor, given the closeness of UK and US markets, how worried are you about the constant attack from President Trump on Jay Powell, but also the firing of the jobs number person? Well, Francine, I obviously don't comment on events in the US. तो अभी कुछ खास पूछने को है नहीं. क्वेश्चंस जो है मेरे ख्याल से सारे हो गए मेजर. You've often talked about the UK being an open economy and that leaves it a little vulnerable to external shocks. But at the moment, do you feel like the challenges to growth, the questions around the... तो समरी कंक्लूजन ये है मेन पॉइंट्स पे. इन्फ्लेशन आगे जाते हुए बढ़ेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है इनका. नियर टर्म में बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे सेटल होगा, लेकिन 2-3 महीने तो बढ़ेगा. तो हॉकिश स्टेटमेंट है ये. दूसरा, जो भी लोगों ने वोट किया है, 5 लोगों ने वोट किया है कट करने के लिए 8 के बदले, और 4 लोगों ने वोट किया है मेंटेन करने के लिए 1 के बदले. तो वो भी एक हॉकिश पार्ट है. ग्रोथ इन्होंने बोला है कि ज्यादा कुछ मुझे तकलीफ नहीं लग रही है, तो वो एक न्यूट्रल पार्ट है. हॉकिश नहीं, डोविश नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल पार्ट है. वेजेस कम होंगे आगे जाते हुए, वेजेस ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, ऐसा थोड़ा एक्सपेक्टेशन है. तो वो एक डोविश पार्ट है. समराइज करते हैं तो मुझे लगता है कि हॉकिशनेस थोड़ी ज्यादा है पॉलिसी में. बैलेंस पॉलिसी है लेकिन थोड़ी हॉकिशनेस ज्यादा है. ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जीबीपी यूएसडी को बाय करना चाहिए. यूके के लिए पॉजिटिव है. ये एक क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कंक्लूजन लग रहा है पॉलिसी का. इसमें कुछ खास डाउट जैसा नहीं है. उसका रीजन ये है कि उन्होंने बोला है कि जो पाथ था, जो इंटरेस्ट रेट का कट का जो पाथ था, वो पाथ जो है वो अभी नीचे की तरफ ही है और तेजी से नीचे की तरफ जाएगा वैसा नहीं है. अगर नीचे की तरफ का है फिर भी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे नीचे जाएगा, शायद कट ना हो, न्यूट्रल रेट के आसपास. ये जो डिस्कशन था वो मोटा मोटी कहीं पे दिखा रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो जितनी तेजी से नीचे जाना चाहिए थे उतने तेजी से नीचे नहीं जाएंगे, उतने जल्दी नीचे नहीं जाएंगे, राइट. उतनी स्पीड और उतने जल्दी नीचे नहीं जाएंगे. तो वो एक हॉकिश क्लैरिटी देता है यहाँ पर ये पॉलिसी का. तो दिस इज अ हॉकिश पॉलिसी विदाउट डाउट. एंड इसकी वजह से हमको जीबीपी यूएसडी को बाय करना चाहिए. फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ का एनालिसिस ये कहता है कि यू शुड बाय जीबीपी यूएसडी. अब आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस. सो सेंटिमेंटल एनालिसिस यानी कि रिटेल ट्रेडर अभी क्या कर रहे हैं वो हम चेक करते हैं. तो जीबीपी यूएसडी 59% लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हैं, 41% लोगों ने बाय किया है. मोटा मोटी 40-60 को हम कंसीडर करते हैं रेशियो को. पॉलिसी है 1% की छूट छाट तो ली जा सकती है, कुछ खास नहीं है. तो आप जीबीपी यूएसडी को लॉन्ग कर सकते हैं. रिटेल सेंटीमेंट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं. तो ये आपका जो फंडामेंटल न्यूज बोल रहा है कि आपको जीबीपी यूएसडी को बाय करना है, सेंटीमेंटल सेकंड स्टेप आपका बोल रहा है कि आपको जीबीपी यूएसडी को बाय करना है. तब अब आता है आपका तीसरा स्टेप यानी कि टेक्निकल. अच्छा, यहाँ पर किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे 40-60 पे ही करना है ट्रेड, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं. बट नॉर्मली दिस इज पॉलिसी जैसा बड़ा इवेंट है, क्लियर हॉकिश पॉलिसी है, 1% इज नॉट दैट बिग, तो आप उसको जाने दे सकते हैं, उतना लिबर्टी ले सकते हैं. तीसरा स्टेप है आपका लेवल्स.
GBP USD आपके सामने है चार्ट, 30 मिनट का चार्ट है। लेवल्स को मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक ये क्लियर सपोर्ट दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये जो पहले इधर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, और यहाँ से ही अगर आज का जो देखेंगे तो पॉलिसी का 4:30 बजे जस्ट यहाँ से जो पॉलिसी का जो न्यू पॉलिसी की जो डेटा रिलीज हुआ है, यहीं से ब्रेकआउट आया है, यहीं से प्राइस भागा है, तो लेवल तो परफेक्ट है। इसके अलावा क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, थोड़ा बड़े चार्ट पे चले जाते हैं तो और हमको क्लैरिटी मिल सकती है। ये एक लेवल है, क्या तो इस तरह से कुछ लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर आसपास। एंड एक और लेवल जो है वो ये हो सकता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये लेवल्स जो है वो क्लैरिटी के साथ हम फॉलो कर सकते हैं। सो करंट लेवल पे जब पॉलिसी रिलीज हुई है, यहाँ पे ये लेवल से प्राइस स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ जाना, और वो एक बहुत अच्छे लेवल से मैं मानता हूँ। यहाँ पर एंट्री मिली हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एंट्री मिली नहीं है हमको, क्योंकि हमने वेट किया ऑफकोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो ही हमारा मेथड है, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द मेथड, कुछ भी हो। सो अब यहाँ से आगे के लेवल्स को देखते हैं। तो रेजिस्टेंस, करंट लेवल प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका इधर आता है 1.3469 के आसपास, सेकंड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आता है 1.3509 के आसपास, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 1.3509 वाला, वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर आता है 1.3592, जो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके। स्क्रीन, हाँ। सो लेवल्स जो है मैंने मार्क किए हैं। करंट लेवल प्राइस यहाँ पर चल रहा है 1.3424 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 1.3469 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 1.3509 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 1.3592 के आसपास। अब जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो एक फाइनल रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन काफी दूर है यहाँ से करंट लेवल से, और 170 पिप्स 180 पिप्स के आसपास है, 170 पिप्स के आसपास है, जो कि काफी दूर है। और न्यूज जहाँ सही से वहां से 220 पिप है, तो उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ट्रेड वेट ट्रेड में काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। हालांकि न्यूज पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो काफी दूर हो जाएगा। उससे पहला वाला जो उससे प्रीवियस मतलब उससे जस्ट पहले वाला जो रेजिस्टेंस है 1.3509, वो एक टारगेट के तौर पर एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है। एंड नीचे की तरफ जब न्यूज आई थी, वो जो लेवल्स थे वो एक परफेक्ट सपोर्ट थे, तो वो, और उसके नीचे 1.3333 के आसपास जो सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बेस लेवल की तरह काम कर सकता है। अब एंट्री का क्या सिनेरियोस बनता है पर्टिकुलर ट्रेड में, तो मेरे ख्याल से अभी जो करंट प्राइस है, मुझे अच्छा ये ट्रेड का एनालिसिस मैं आपको बताऊं तो मेरा ट्रेड एनालिसिस मुझे ये लगता है कि यहाँ पर 2 एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेड अच्छा ट्रेड है, और जहां से न्यूज आई थी वो वहां से प्राइस ऑलरेडी 50-55 चल चुका है, तो काफी ज्यादा प्राइस चल चुका है। तो यहाँ से फुल एंट्री लेना वो भी थोड़ा सही नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर ट्रेड में कि 1.3417 के आसपास जहां पर ये लेवल हमने मार्क किया है, वहां पर आपको एक एंट्री करनी चाहिए। दूसरी एंट्री आपको वहां जहां से न्यूज स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1.3373 के आसपास करनी चाहिए। 2 एंट्री आपको प्लान करनी चाहिए, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस बन जाएगा करीब करीब 1.3395 के आसपास। तो इन दोनों के बीच में यस 95,
हाँ 1.3395 के आसपास आपका एवरेज प्राइस बन जाएगा। 1.3417 के आसपास एक एंट्री, 1.3373 के आसपास दूसरी एंट्री। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1.3333 का रखना चाहिए, जो कि हो जाएगा 60 पिप्स के आसपास, 60-65 पिप्स के रेंज में। एंड आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए 1.3509। अगर एक सिंगल टारगेट लेना है तो, जो कि हो जाएगा करीब करीब 110-115 पिप का। एंड अगर इस ट्रेड को आपको उस तरह से कंटिन्यू ना करना हो तो आप टारगेट के दो लेवल सेट कर सकते हो, 1.3469, 1.3509, जिससे आपका टारगेट बन जाएगा 1.3489, तो जो कि 90 पिप्स के आसपास का आपका ओवरऑल ट्रेड बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अभी। तो ये लेवल्स, जो भी सारे लेवल्स हैं, लेवल्स को एक बार समराइज कर देता हूं फिर से। आपका जो एंट्री है, एक एंट्री बनता है इधर ये पर्टिकुलर ट्रेड में, एंट्री है, मैं बाय लिख दूं, बाय एट 1.3417। आपकी दूसरी एंट्री है 3373। आपका एसएल है 1.3333। तो बाय जो मैंने लिखा है वो एंट्री 1, ये एंट्री 2। ठीक है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। एंट्री 1, एंट्री 2, और आपका टारगेट 1, एंड आपका टारगेट 2। ठीक है, तो ये है आपका ट्रेड, 2 एंट्री, 2 एग्जिट और स्टॉप लॉस 1। और यहां पर मैं देखो, ये हो गया आपका ट्रेड का एक सेटअप। दूसरा सेटअप ये हो सकता है कि आप टारगेट सिर्फ सिंगल टारगेट रखो, 2 टारगेट नहीं रखो, 1.3509 इकलौता टारगेट रखो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हटा के, इस पर्टिकुलर लाइन को हटा के आपका ट्रेड का सेटअप इस तरह से भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी एंड दूसरी पॉसिबिलिटीज, मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज बता दी। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से इस ट्रेड को लेना है। तो जो कंजर्वेटिव है वो 2 टारगेट लेके चलेंगे, जो अग्रेसिव है वो 1 टारगेट लेके चलेंगे। उस तरह से आप ये ट्रेड को परस्यू कर सकते हो। तो 2 एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये है आपका ट्रेड जीबीपी यूएसडी का मेरे हिसाब से। राइट, सो आज की पॉलिसी का एनालिसिस समरी क्या है? पॉलिसी है हॉकिश, रिटेल सेंटीमेंट भी सजेस्ट कर रहा है कि कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा मूव हो चुका है, पॉलिसी के बाद 60 पिप्स के आसपास का मूव आ चुका है। हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट मिलता है नॉर्मली, मार्केट वन साइड बहुत कम भागता है, तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा। एंट्री 1 at 1.3417, entry 2 at 1.3373, stop loss at 1.3333। स्टॉप लॉस होगा करीब करीब, आपका जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा लगभग 1.3395 के आसपास, एंड आपका जो या 97 के आसपास जो भी आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस आएगा करीब करीब 60-65 पिप्स के रेंज में, एंड आपका टारगेट आएगा, अगर सिंगल टारगेट है 1.3509 का टारगेट है, तो आपका टारगेट आएगा 115 पिप के आसपास, 110 पिप के आसपास। एंड आपका 2 जो टारगेट मैंने बताए थे उस तरह से जाओगे तो टारगेट आएगा 90 पिप्स के आसपास। अगर 110 पिप के आसपास का आपका टारगेट आ रहा है तो 1:1.75 जितना होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर 2 टारगेट के हिसाब से जाओगे तो 1:1.5 के आसपास का होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
या 1:1.14 के आसपास होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दिस इज द ट्रेड बेस्ड ऑन जीबीपी यूएसडी पॉलिसी। अभी आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो वी कैन डिस्कस। यस, एक बार कमेंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। धर्मेश भाई सेइंग गुड इवनिंग, यस। डीके पटेल गुड इवनिंग। राकेश भाई गुड इवनिंग। चार्ट नॉट सीन, ओके। यस, ये पहले की कमेंट्स आई थिंक। सागर भाई स्क्रीन नहीं शेयर नहीं है, ठीक है। मीन्स शेयर करो, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन 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 स्क्रीन्स, ओके। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धर्मेश भाई। डेडलाइन क्या हुई है ट्रेड का? तो ट्रेड जो है वो हम 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, पॉलिसी के बेस पर लिया गया ट्रेड, राइट। इसके जितना या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज हो तो हमको ये ट्रेड को उससे पहले क्लियर करना पड़ता है। अभी यूएस की पॉलिसी जा चुकी है। अच्छा, इसके जितना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जियोपॉलिटिकल इवेंट। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो हमको ये ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज इसके जितना इंपॉर्टेंट होता है वो है पॉलिसी, और वो है यूएस की पॉलिसी, क्योंकि जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो या तो यूके या तो यूएसडी, दो कंट्री की पॉलिसी मैटर करती है। यूएस की पॉलिसी जा चुकी है तो आने वाले 10 दिन में वो पॉलिसी नहीं आने वाली है, राइट। सो अगर इसका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आता है विद इन रादर गिवन लेवल के हिसाब से, तो आपका डेडलाइन जो है वो रहेगा 10 दिन, आज से लेकर 10 दिन। 7 तारीख है आज, तो आप ये ट्रेड मोटा मोटी 16-17 तारीख तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो उसको आपको एडजस्ट करना है। आज 7 तारीख है, 14 तारीख को आएगा गुरुवार, 15, 16, 17, राइट। ऑलमोस्ट मंडे आएगा, तो मेरे हिसाब से फ्राइडे को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे आज से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे 8 से 9 दिन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो फिर लास्ट में जूस कुछ बचता नहीं है, तो निकल जाना चाहिए, वीकेंड पे नहीं ले जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फ्राइडे इज द डेडलाइन, नेक्स्ट फ्राइडे इज द डेडलाइन, जहां तक आपको ट्रेड को क्लियर कर लेना चाहिए, राइट। और ऊपर वाला जो एक लेवल था 1.3592 वाला, जो मैंने अभी हटा दिया यहाँ से, तो अगर आप कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और लगता है कि नहीं मुझे बेस्ट लेवल टारगेट करना है, तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जब भी 1:1 से बड़ा ट्रेड हो तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना है। तो इवन इन दिस ट्रेड अगर आपके दोनों एंट्री आ जाए, आपका प्राइस ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस 65 पिप्स का है या 67 पिप्स का है, तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना प्राइस जब भी मूव हो जाए तो आप अपने ट्रेड को वापस से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ले आओ, ताकि आपको एटलीस्ट ये ट्रेड में लॉस तो ना ही हो, राइट। ये तो होना ही चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव। तो जब भी 1:1 से बड़ा ट्रेड हो तो हमें हमारे स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करना चाहिए। राकेश शर्मा जी, सर होल्ड कब तक कर सकते हैं? वही हमने डिस्कस किया राकेश जी, होल्ड आप 10 दिन तक कर सकते हो मैक्सिमम, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक कर सकते हो मैक्सिमम। 15th है फ्राइडे को, 15th ऑफ अगस्त, तो तब तक होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को मैक्सिमम। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट। ट्रेड बहुत क्लियर है, उसमें कुछ खास कंफ्यूजन जैसा है नहीं, और एंट्री के 2 लेवल्स मैंने आपको बताया है। दोनों लेवल्स में आपको जब मौका मिले तब आप एंट्री कर सकते हो, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी क्लियर। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? वी कैन वेट फॉर 1 more minute. ધર્મેશ ભાઈ, સર જોબલેસના ડેટા પર યુરોમાં ટ્રેડ લઈ શકાય? धर्मेश भाई, यूरो में एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के बेस पर, मतलब जॉबलेस डेटा, मतलब आप यूएस के जॉबलेस डेटा की बात कर रहे हो या 6 बजे आने वाले उसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल जॉबलेस क्लेम, कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें दूसरी करेंसी पे ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नॉन फार्म पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम, कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम के बेस पर जीबीपीयूएसडी को छोड़ के दूसरी कोई भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। जीबीपीयूएसडी में नहीं करना है, क्योंकि जीबीपीयूएसडी इज वेरी क्लियर, यहाँ पर पॉलिसी का ट्रेड चल रहा है, तो दूसरा कोई ट्रेड इसमें नहीं लेना है।
If retracement does not come, we might miss entry. Is such a thing possible? Of course, राकेश जी, सब कुछ possible है. Everything is possible in market. कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो मार्केट में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है. तो अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो एंट्री हाथ से निकल जाए, इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी. लेकिन करंट लेवल पे अगर हम एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, वो भी एक सच्चाई है. तो अनफेवरेबल सिचुएशन में ट्रेड कैसे करें? लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा ना. रिस्क ज्यादा लेंगे, रिवॉर्ड कम एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो मेरे तो दिमाग में नहीं बैठता. ऐसे कम मौके होते हैं जहां पर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं देता है. मार्केट नॉर्मली रिट्रेसमेंट देता है, ज्यादातर देता है. तो देगा रिट्रेसमेंट, नहीं दिया तो ठीक है, दूसरा कोई नंबर आएगा, दूसरा डेटा आएगा, दूसरा ट्रेड करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि आखिरी ट्रेड है. All right. So I think it's time to conclude today's live. I hope you guys enjoyed it. And जैसे हर बार मैं कहता हूँ, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. एंड ऐसे ही जुड़ते रहिए. विल कीप डूइंग मोर एंड मोर लाइव, जितना पॉसिबल होगा उतना. राइट. इस बार पॉलिसी में आई थिंक हमने जापान की पॉलिसी को छोड़ के तीनों पॉलिसीज तो कवर की है लाइव में. एक पॉलिसी का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला है, एक पॉलिसी में स्टॉप लॉस लगा, एक में टारगेट आया. राइट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. All right then, see you in next live. Till then, enjoy. Bye bye.